support reactions. So these two things we have discussed in the last class. Are you getting my voice? Hello? Hello, you are getting my voice? Yes, sir. Okay. So in the last class we have discussed these things. I'm giving the summary of that one. For the first one, distribution of forces, there is UDL, UVL, okay, as per function distribution. And the first thing for that is the point load. Okay, point load is also there. So this is second, this is third, and this is fourth, and this one is the first. Okay, so the basic thing is this one, and with the help of that one you are getting the UDL, UVL, and as per function you are getting. So first one is this one. Now I'm coming to the support reactions, and the support reactions first is the roller, second hinge, third fixed, and fourth ball and socket joint. Okay, this one is represented like this, this one is represented like this, this one is like this, okay, and this one is like this. Okay, so these supports are there. Here for 2D case I am going to consider for these three. For 2D, this you are getting only one reaction force. Here you will get two reaction force. Here you will get two reaction force and one moment. Okay, for 2D, and for these two 3D case, we are getting three reaction forces in this case and three moments as per the condition, whether all three forces are not passing, all three components are not passing through that joint. And here you are getting only three reaction forces. Okay, so this one is a summary of the last class, and yesterday in the last class I told you that in the next class we will solve some problems. So before solving that problems, we'll discuss two more topics. First, that is equivalent force. At a point, or next one, second one is that is simplest resultant
simplest resultant for the system. Okay, simplest resultant. So these two things we will discuss today, and after that we will solve some problems. Okay, so I'm coming to the first one, that is the equivalent force system. So equivalent force system, that means you are going to, for example, one rod is there, okay, and this one is, when you are here, this is A point and this is B point, and for example this is F1, this is F2, and this is F3. Okay, so what is going on, as I told you that you can shift your force location from one point to another point. So this one is A, this one is B, this one is C, and this one is D. Okay, so if it is said that you have to find out each and every force, this is the system, okay, where three forces are there, okay, and for example this is the fixed at A point, and it is said that you have to find out equivalent force at equivalent force system at a point, that is at A point. So you are going to shift each and every force to that particular point, so that the total system is now converted to another system where only one force is there. Okay, so I am saying that this one is anywhere here, you will get the resultant force. Okay, and by shifting all these forces, you will get some couple also at this location. Okay, at this location, whether it may be in the clockwise direction or it may be in the anti-clockwise direction. So as I told you in the previous class that, for example, one force is anywhere here, okay, at A location. I want to shift this force to B location. So you have to apply the same force F and opposite force the same value, that is S. Okay, so this one is shifted to this location at B location, but you are getting this couple. Okay, so this is the A location, for example, and this one is the B location. So you are getting the F force is shifted to this from A to B, that is F value, and due to that you are getting a couple C. Okay, so this is equivalent to this one. So same effect is there. Okay, you're going to change this or this, both are same. Okay, so these two systems are same, equivalent to each other. Okay, so as in this case, for example, there are three forces. Say this one is there, this one is F1, say this one is F2, and this one is F3. This is A, this is B, this is C, and this is D. So you have to shift each and every force from their location to the required location. You have to shift this F1 to A. Okay, for example, I have taken another color, so I am shifting this A F1 like this. Okay, so F1 I am shifting. So if you are going to add this F1, so you have to replace one F1 also. Okay, similarly F2 will be there. Okay, F2 and F2.
the same A point. Now again I am taking this F3 and F3. Are you getting my point? So you are getting this A point with F1 force, F2 force, and F3 force. Okay, three forces, and but due to shifting of F1 you will get some couple. So there's this one is F1, this one F1, and this one is F1. Okay, so F1 and F1, it will create a couple C1. Okay, clear? Similarly F2, F2 is this, F2 is this, so reverse of that one we will get C2. Okay, similarly you get the C3. Okay, so we have shifted each and every force along with couple. So at A point you will have F1 along with C1. Okay, similarly A point will have also, sorry, this is A will have also plus F2 and C2. Okay, plus F3 and C3. This is again. Okay, so there are three parts: first, second, and third. If you are going to add all these three, you will get F1 plus F2 plus F3. This is the resultant force along with resultant couple will be C1 plus C2 plus C3. Okay, okay, so this one is the equivalent force system at A. Okay, or you can take A. This is the one method by which you can shift that. Okay, okay, so are you getting my point? What I want to say? Hello. Yes. Another thing is that, for example, this is A, the same thing, but by second method you can also solve that. For example, this is F1, say F2 and F3. Okay, so first thing is that you have to take the resultant. What is the resultant force? That is F1 plus F2 plus F3. Okay, so this will be the your resultant. Okay, now you want the equivalent force system at A location. At A location. Okay, so consider this A point. You have to consider A point and take moment of each and every force. F1, F2, and F3. Okay, so whatever the distances are there, you have to consider that. So basically what is going on, your resultant couple will be R1 cross F plus R2 cross F2 plus R3 cross F3. Okay, so your resultant will be at A location, that is resultant force along with resultant couple. Okay, at A location, and that will be same. That will be
same. That is what, if you are taking moment about this, so this is R1 into F1. Similarly, this is R2, for example. Okay, we are considering these points R2, and here, for example, this is R3. So you are getting the moment about a point of all these three forces. You will get the same result. So these results are same. Okay, these are nothing but both are same. Okay, so the help of that one, you can get the resultant and resultant couple at required point. Are you getting my point? Hello? Yes, sir. Okay. Now I'm going to in the previous slide I also written that resultant. Resultant means, for example, some forces are there, say F1, F2, F3, F4, F5, F6, for example, F7. So these forces are there. If you want the resultant, okay, so you have to sum up. That means you have to add. Resultant force will be R1 plus, F1 plus F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5, okay, plus F6 plus F7. Okay, so this is the resultant. Okay, for example, in this some couples are also there. Okay, C1, C2, C3, like that. So resultant force along with resultant couple, that will be C1 plus C2 plus C3. हम एक ही पॉइंट पे सारे फोर्सेस ले लिए हैं तो सारे रिजल्टेंट आपको जो भी मिलेंगे मिल गए, ठीक है ना? क्लियर? So this is resultant force and resultant couple. Now, if the drawing is like this, one force is anywhere here, F1, second one is F2, F3, say F4, okay, F5. So for these system, for these forces, you will get resultant, okay, say R1, F1 plus F2 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5. Okay, it will act anywhere in the space. Any location will be there where it will act. Any location. Okay, and if you want a particular required location, then you have to take the moment about that particular location. So then you will get the resultant force plus, not plus, along with resultant couple. Okay, if you want at a particular location, so at a required location. Okay, is it clear? Now, if this type of solution is there, so always you will get one resultant force and one resultant couple. But if your resultant will be in either in the form of resultant force or in the form of resultant couple, then it is known as simplest resultant. Okay,
then it is known as simplest resultant. Are you getting my point? Hello. So normally, for example, if couples are also there and resultant forces are also there, so you will get your total resultant will be in the form of resultant force along with रिजल्टेंट कपल. सो इसको फर्दर मर्ज करके अगर हम या तो रिजल्टेंट फोर्स में लाएं और रिजल्टेंट कपल में लेके आए रिजल्टेंट, ओके, तब ये होगा. और दिस इज और, ओके, नॉट एंड, ओके, दिस इज और, देन इट इज नोन एज सिंपलेस्ट रिजल्टेंट. ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. एक एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में है, मैं उसे दिखाता हूँ, शो करता हूँ. This one is the simple your fourth chapter, that is equivalent force system. Okay, this is actually in this textbook, the PDF textbook, it is not properly scanned, so you will get some spelling mistake or not unprinted material also. So here this one is just like that, what force you are going to shifting from one location to another location. So you will have one resultant force and one couple. Okay, and one example is there that is related to simplest resultant. So I'm going to show that resultant force, you know that how you are going to get that. Simple, you have to add each and every force, you will get the this one is the simplest resultant of special force system. So for coplanar and one example I want to for example this one. Okay, so it is said that this is a question. Okay, compute the simplest result of the loads showing acting on the beam in figure 4.18e. Give the intercept with the x-axis. Okay, so there is a one couple moment, couple, that is 50 Newton meter. Are you getting my cursor? Yes, sir. So this is 50 Newton meter couple. Okay, one horizontal force is there. This is the lever. This is the rod, which is have a vertical portion. Okay, this is horizontal rod. One vertical portion is there where the horizontal force is 100 Newton load at a distance 0.4 meter from the horizontal rod is there. Okay, and from O point at 2.5 meter, 175 Newton load is in the downward, vertically downward is applied. Okay, so locations are given. There are two supports. This one is the hinge support and this one is the roller support. Okay, so don't bother about the support now because this is only due to for the resultant force. What is active load? Okay, not reactive load. This is only for active load. Okay, so if you are going to get a resultant, so for example this is the resultant force. So summation of two forces 75 J and 100 I. Okay, 75 in the downward direction, this one in the forward direction. So this is plus and this is minus. Okay, for example positive side in the upward side and lower side is the negative. So 75 in the negative side, 100 and is the positive side. So you will get the resultant force. This one is the resultant, 100 Newton and 75 Newton. So this is the resultant, 100 I minus 75 J. Okay, now you want the simplest resultant. Okay, so here what you are getting, resultant force along with a couple. For example, this one is the 50 Newton meter is the couple and Fr is giving the resultant of 100 Newton and 75 Newton. Okay, so here this is this one. Okay,
Is it clear? Just a minute. I'm going to Yes, sir. copy that. How can I take the snapshot? Just a minute. इसको स्नैपशॉट लेके उधर लेके आते हैं. सर विंडो की शिफ्ट एस इज द शॉर्टकट। नहीं, एक्चुअली मैं स्क्रीन पे हूँ ना, वो उसे बंद कर रखा है कीबोर्ड, नीचे की ओर है कीबोर्ड. एक मिनट. कैसे आएगा भाई? भेज नहीं रहा है. हाँ, अब ले लो. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट अ मिनट. इस क्वेश्चन को वहाँ ले आते हैं. इसमें नहीं होगा पेस्ट. क्या है इसमें? क्यों नहीं कॉपी पेस्ट हो रहा? खैर इसी में डिस्कस करते हैं, अभी बाद में देखेंगे उसको. अरे मैं ये चाहता था कि पेन चले. पेन चल नहीं रहा है. इसमें चलता तो हो जाता. चलो एक मिनट, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. रुको, होगा क्यों नहीं होगा. ये क्या हो गया? हम्म.
Is it visible to all of you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ अब दिख रहा है, चलो. So this one is the couple. This is first force, this one is the second force. So resultant is there. Okay, this is only for force. This is only for force. Okay, this is only for force, and here your resultant will be along with a couple. Okay, this one. Okay, so your total resultant is resultant force and resultant couple. Okay, इसको कन्वर्ट करने के लिए या तो रिजल्टेंट फोर्स में लेके आइए या और resultant couple, then your resultant simplest resultant will be there. Okay, so यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो भी फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स हमने कहीं जनरेट कर लिया, मतलब जो फाइंड किया वो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स. इसे x डिस्टेंस हमने ओरिजिन से ले लिया, इन्होंने रेफरेंस ले लिया ओरिजिन. ओके, तो दिस इज x. ओके, सो रिजल्टेंट फोर्स में दो चीजें हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, सो इफ यू आर टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, so this horizontal component is passing through this, or you can say that this is r vector and this is the fr, r cross fr. You can take this one, or individual couple moment को sorry component को लेंगे तो this will give the moment and this will not give the moment. Okay, clear? Now they have taken this equation. What is giving this equation? This is the resultant force. Okay, so 100i तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना. 100i से तो कोई मोमेंट मिल नहीं रहा, 75j से मोमेंट मिलेगा, ठीक है. तो दैट इज 75j. इट इज गिविंग द रोटेशन clockwise direction. So normally plus is anti-clockwise, okay, anti-clockwise, and negative is clockwise, or you can say that counterclockwise. Anti-clockwise is nothing but the counterclockwise. Okay, counterclockwise is you are taking positive, or clockwise you are taking negative. So this one, and how many components of forces, that is this one. So resultant, जब इधर से resultant ले रहे हैं और इधर से जो भी forces प्रॉब्लम में थे वो कंसीडर कर रहे हैं. ओके, दिस इज द रिजल्टेंट फॉर रिजल्टेंट फोर्स. सो इफ यू आर टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस वन, सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस वन. ओके, क्लियर? नाउ फॉर simplest resultant you have to add this one also in the moment equation. Okay, along with the force into distance, 100 Newton into 0.4, okay, and 75 Newton into 2.5. So they have taken 2.5 into 75 in the clockwise direction, again 0.4 into 100 into clockwise direction, but 50 Newton meter in the anti-clockwise direction. So this is positive. So in the resultant, total resultant, you are getting this couple included in this equation, so that whatever force you are getting, so your resultant is this one, but it is shifted to a particular location, so that your couple is also included in that. Okay, are you getting my point? Yes, sir. So this is the resultant in the form of single force only, there is no moment. So you will get the resultant in a simplest form, or you can say that simple कि आपने ये फोर्स लिया था और इसे शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है. सो दिस इज द गिविंग योर कपल. सो इसको अलग से लिखें. सो दिस इज से एफ फोर्स, this is F force, and along with this couple. So this is say R point. So at R point you are getting, this is the resultant force and this is the resultant couple. Okay,
if so many forces are there, so this will be Fr and this will be Cr. Okay, so resultant couple and this is the resultant force. इसको अगर हम वापस एक ऐसी लोकेशन पर ले आए कि जो ये रिजॉल्व कर दे, मतलब कि इसके इनबिल्ट हो जाए, तो अगर हम फिर से इस लोकेशन को वापस यहाँ पर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा F and this one is nullified. ओके, तो यहाँ पर अगर आ गया तो ये क्या हो गया ओनली इन द फॉर्म ऑफ फोर्स. ठीक है, सो कहने का मतलब कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, सेम चीज़ ही है. हम उसको इस जगह लोकेट, फॉर एग्जांपल ढेर सारे फोर्सेस हैं तो ये यहाँ पर नहीं आएगा ना. आपको क्या करना होगा, मान लीजिए कोई कपल अलग से नहीं है, F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, फॉर एग्जांपल 3 फोर्सेस आर देयर एंड ड्यू टू दैट एनी अदर लोकेशन से A पॉइंट इज देयर, यू आर गेटिंग से Fr एंड Cr. ओके, सो इसको अगर वापस हम उसी लोकेशन पे सारे फोर्सेस कर दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल रिजल्टेंट फोर्स के बराबर आ जाएगा. बट यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पर लोकेशन रिक्वायर्ड थी कि ए पॉइंट पर आपने लोकेशन फाइंड करनी है. दिस इज द इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम. नाउ अगेन इफ योर इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम इज शिफ्टेड टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन तीन से आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट. ओके, रिजल्टेंट की लोकेशन फाइंड करनी होती है. जो लोकेशन फाइंड होगी वहाँ पर कोई कपल तो जनरेट नहीं होगा इस केस में. ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर कपल अलोंग विद फोर्स है. तो जो भी रिजल्टेंट लोकेशन, मान लीजिए बी पे आपका लोकेशन आ रहा है, तो अगर हम इस सिस्टम को बी लोकेशन पे लेके जाएंगे तो सिर्फ रिजल्टेंट मिलेगा, जस्ट लाइक दिस. ओके, जस्ट लाइक दिस. ओके, वी आर गेटिंग ओनली फोर्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. So basically, if you are writing your resultant in the form of force or in the form of couple, this is or, okay, either this or that, okay, then you can say that your resultant is in the simplest form. Okay, so simplest resultant के लिए आपको या तो इसको फोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या कपल के फॉर्म में. अब जैसे फोर्स आपने किया है कपल हटा के, अब इसका अगर आपको शिफ्ट करना है, फोर्सेस को नलीफाई करना है, ये नलीफाई हो जाए. जैसे इसमें आपने Cr को नलीफाई किया है, Cr को हटा के सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्म में आपने रिजल्टेंट लिखा है. अब अगर इसको हटा दें और इसके फॉर्म में रहने दें तो भी वही बात है, ये एक सिंपल रिजल्टेंट होगा, सिंपलेस्ट रिजल्टेंट, वेयर फोर्स इज नॉट देयर, ओनली कपल इज देयर. बात समझ में आई? ठीक है ना? हेलो. Yes, sir. अब जैसे इसको यहाँ पर फोर्स है, यहाँ फोर्स और कपल है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे इसको कहीं और एक अनदर लोकेशन पे लेके जाए जहाँ पर सिर्फ कपल हो और फोर्स ना हो. ठीक है, तो सिर्फ कपल रहेगा तो ये रिजल्टेंट सिंपलेस्ट होगा, फोर्स यहाँ पर नहीं है, एफ इज नलीफाइड. ठीक है, तो आपके दो केसेस बनते हैं. फर्स्ट केस सिंगल फोर्स था, इसको दूसरे लोकेशन पे ले गए तो इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ये ऐसे, तो ये ऐसे हो गया, तो ये हट जाएगा. ठीक है, ये हट गया. पहले था आपका फोर्स, अब इधर आया तो ये बन गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे घूम जाएगा. ठीक है, सी एंड एफ. ये हो गया रिजल्टेंट एट ए पॉइंट, और यू कैन से दैट इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, और यू कैन से दैट शिफ्टिंग ऑफ फोर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ठीक है, अब इसको अगर हम फिर से कहीं शिफ्ट करें जहाँ पर सिर्फ फोर्स के फॉर्म में बने,
एक्चुअल में तो यहीं पर आएगा, लेकिन हम अभी इधर ले रहे हैं ए बी सी पॉइंट, ओके। क्योंकि वापस आएगा तभी ये फोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए एफ फोर्स बना, फर्दर दिस इज एफ फोर्स इज देयर, सो दिस इज द सिंपलेस्ट रिजल्ट, ओके। इसको हम और कहीं चेंज करें जहां पर सिर्फ कपल जनरेट, ठीक है, सी आर, ओके, no force is there, okay, at that location. This is also known as simplest result. So this is either in the form of force or in the form of couple only. So only force, only moment or couple. Moment लिख रहे हैं, couple नहीं लिख रहे हैं, moment लिख रहे हैं, okay. Then it is known as these two are nothing but the simplest result. Clear? Is it clear to all of you? हेलो, बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सो ये है आपका, या तो फोर्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर लेके जाना, या इसे कहेंगे कि एक ढेर सारे फोर्सेस हैं अगर, और क्वेश्चन में ये कहा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, देन यू हैव टू शिफ्ट ईच एंड एवरी फोर्स टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, यू विल गेट द इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम एट दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड लोकेशन, ओके। Further, if it is said that you have to find out the simplest resultant of the total system, then you have to find a solution in such a way that you are getting only resultant force or resultant couple, okay. Then it is known as simplest resultant. Clear? And for all these systems, in the question you will get either a concentrated load, or not either, it may be along with also uniformly distributed load, uniformly varying load, okay. So many concentrated load, so many uniformly distributed load, or the combination of, not the combination of uniformly distributed load along with uniformly varying load, okay, uniformly varying load, like this, okay. So the CG of the lower portion, this is uniformly varying, hello, are you getting my voice? Yes, sir. ओके ओके, बीच में नेटवर्क फेल हो गया था. नाउ हियर योर CG will be anywhere here for the triangular loop, okay. So you have to take this one a separate entity and this one a separate entity, okay. Clear? Anywhere here your CG will be there for this lower portion, anywhere here the CG will be there for the upper portion, triangular portion, okay. So this one is say W1, this one is say W2. So as per the individual concept of the triangular load and the rectangular load, you have to consider each and everything so that your result will be accurate, okay. Or you can say that from here to here you can, if you are going to take total one, so you have to take a segment, okay, like this. You have to take segment, okay, and then you have to integrate, then you have to integrate from here to here, okay. Clear? So it's your choice how you are going to solve the problem, okay. So it is your choice कि कैसे आप इसे solve कर रहे हैं, ठीक है. So क्वेश्चन में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ लोड हो सकता है,
2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है, इट में भी 2D, इट में भी 3D, इट में भी 2D और इट में भी 3D टाइप ऑफ क्वेश्चन. As per the question you have to solve the problem. Okay, so next class में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द बेसिक चैप्टर टू टुडेज लेक्चर. ओके, मतलब कि अगले 3 क्लासेस में हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और सैटरडे को एक क्विज होगा. क्लियर? टाइमिंग आप बता दीजिए कि कब क्विज लेना ठीक होगा, क्या टाइमिंग आप चाहते हैं. ठीक है, 1 घंटे का क्विज होगा. ठीक है, तो एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे उसमें, उसे आपको सॉल्व करके विदिन 1 आवर आपको सबमिट करना होगा और क्विज आपका क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में सबमिट करना होगा. ठीक है, PDF फॉर्म में 1 पेज में कोशिश करना कि 1 पेज में ही सॉल्व हो जाए. ठीक है, A4 पेपर है, A4 पेपर को आप लैंडस्केप मोड में पकड़िएगा. लैंडस्केप मोड में बीच में एक लाइन खींच के 2 पार्ट कर लीजिएगा. फर्स्ट हाफ में आधा पोर्शन करिए, सेकंड हाफ में आधा. तो इस तरह से आपका इजी हो जाएगा. एक ही पेज में, सिंगल पेज में सॉल्यूशन हो जाएगा, आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि सिंगल पेज में क्वेश्चन हो जाए और ये सबमिट करिए. अगर उससे ज़्यादा भी लगता है तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अवॉइड करिएगा ज़्यादा पेज भरने से, जिससे कि कॉपी चेकिंग में ईजी हो जाए. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर जो क्विज होगा वो ग्रेडेड होगा या प्रैक्टिस के लिए? नहीं, ग्रेड होगा उसका. ओके. ठीक है, 2 वीक में एक क्विज होगा. ठीक है, तो 3 बिफोर मिड सेम और 3 आफ्टर मिड सेम. ये मैंने पहले ही बताया है फर्स्ट क्लास में. ओके, सर और सब्जेक्टिव होगा. हाँ, सब्जेक्टिव. न्यूमेरिकल होंगे बेटा, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है. सब्जेक्टिव क्या मतलब? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ना, न्यूमेरिकल होगा, उसे सॉल्व करना होगा, उसका फोटो लेके PDF बना के सबमिट करना होगा. Sir, ठीक है, only the answers or the whole solution? कंप्लीट सॉल्यूशन. Alright. ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन यू हैव टू सबमिट. सिलेबस सिलेबस आज तक का. सर कब है ये क्विज? सैटरडे को. आप बताइए, टाइम बताइएगा, सैटरडे को होगा. ठीक है, आंसर आप 1 आवर का होगा. हाँ, 1 आवर का क्विज होगा बेटा. ओके सर. सर आपने बोला तो सर एक बार डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीक से क्लास, लाइक मंडे हो सके तो सैटरडे. हाँ, उसी के बारे में डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ मैं, अभी वही डिस्कस करने जा रहा हूँ.